Hi guys, good morning. Very good morning to all of you. I'm Sabagani, your English faculty at Oliveboard. So yes, good morning Suresh. Good morning everyone. Good morning Madhurima. Good morning Sandeep. I hope I'm clearly audible and visible to you all. एक बार फटाफट से confirm कर दीजिए so that we can start our today's session. So this is the first session of this new month, and today's article itself is very important because it is based on economy. And economy maybe it is like something very important. So quickly join in the session and we will start today's session. Okay. गुड मॉर्निंग कार्तिक, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एक बार गाइस फटाफट से कंफर्म कर दीजिए इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल टू यू ऑल। क्या सभी लोगों के लिए मैं लाइव हो चुकी हूँ? हैप्पी अष्टमी टू ऑल ऑफ यू। I know it is festive season, but still this time is very important. I know कि सारे festivals आप लोगों का बहुत important, मतलब पूरा festive season ही आपका basically है। But आपके लिए ये जो phase है basically अक्टूबर नवंबर, this is very important because आपका पता है किसी month में आपका IBPS PO pre होने वाला है। So IBPS PO pre should be your ultimate target। जो हो चुका पीछे forget everything, जो होने वाला है उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए अगर कोई एग्जामिनेशन है तो दैट इज आईबीपीएस पीओ। एसबीआई पीओ इज आल्सो देयर, बट एज जैसे मैंने बोला है कि सिलेक्शन के चांसेस आईबीपीएस पीओ में ज्यादा हैं। सो प्लीज कंसंट्रेट ऑन दिस फेस्टिवल। तो आपके हर साल आएंगे और जिस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा उससे बड़ा फेस्टिवल आपके लिए कोई नहीं होगा। सो आई नो फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करिए, बट ऐसा नहीं कि डोंट इंडल्ज कंप्लीटली इन दिस फेस्टिव स्पिरिट्स एंड ऑल। ओके, पूरी तरह से इंडल्ज मत होइए, थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करिए, सेलिब्रेट रिफ्रेशमेंट के लिए, बट पूरी तरह से आप इंडल्ज नहीं होइए। ओके, सो यस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। शुभम, दिव्या, धीरेन्द्र, एवरीवन। So we will start today's session. As I told, today's article is very important because आपका ये इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल है, तो हम लोग क्विकली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वोकैब भी काफी अच्छे मिलेंगे आज आपको। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सो इफ आई टॉक अबाउट दिस होमवर्क, बेसिकली ये फ्राइडे का होमवर्क है, सैटरडे वी डिडंट हैव एनी सेशन। सो एसटी, देवाशीष, आयशा पटनायक, ललिता भट्ट, शैलेंद्र कुमार, संजीव कुमार, गीता सिंह, अर्जू, मधुरिमा, शुभम, टीना, पूर्व, सुरेंद्र कुमार दुबे, राहुल, सोनाली, प्रिया कुशवाहा, मारिया जॉर्ज, दयानिधि। सो ऑल दीज पीपल डिड द होमवर्क। इन सब लोगों ने होमवर्क किया था। गुड मॉर्निंग अपूर्व, गुड मॉर्निंग एवरीवन। So we will start today's session with a quote. So the quote is, remember life's greatest difficulties always happen right before life's greatest breakthroughs. This I hope कि जितने भी successful people हैं जिन्होंने अपने life में कुछ भी किया होगा, so you will see this कि they all will agree with this point, and this is the time that either makes you or mars you। ये ऐसा फेज होता है ना कि ये या तो आपको बना देगा या आपको बिल्कुल ही खराब कर देगा। ओके, स्पॉइल कर देगा। कैन शेप योर फ्यूचर, इट कैन मार योर फ्यूचर ऑल्सो। कि जनरली आप देखेंगे कि लाइफ का जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट होता है, आपको लगेगा कि नहीं ये लाइफ, ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा फेज है, लेकिन उस फेज के पहले वो फेज तभी आता है जब आपके लाइफ की सबसे बड़ी डिफिकल्टी आपके सामने होती है। सो वन दैट डिफिकल्टीज यू ओवरकम, दैट डिफिकल्टीज यू विल सी द biggest success of your life. So this is something, yes, correct, Dhiren, it is based on rupees. It is based on that only. Okay. So breakthrough, yes, breakthrough basically you know development. So I hope that वो आप सबकी लाइफ का breakthrough वाला phase ये IBPS PU ही होगा। Okay, that is going to be the most successful phase for you. Okay. So this year IBPS PO should be breakthrough for you. That is why I'm telling you, don't indulge yourself that much in all these festive vibes and all. Okay. Festival हर साल आएगा। The day you will get selected, that will be the biggest festival। वो आपके लिए होली, दिवाली सब कुछ आपका वही हो जाएगा। ओके, सो आई होप यू विल कीप दिस इन माइंड। और देखिए ये चीज, ये जो टफ फेज होता है ना कि मतलब सक्सेस के पहले वाला फेज, ये फेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज ये बहुत डिफिकल्ट फेज होता है। उस टाइम लोगों को लगता है नहीं मुझे गिव अप कर देना, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू। और जिसने उस फेज को टैकल कर लिया, उसको ओवरकम कर लिया, एक आराम से, मतलब उस फेज को भी उसने गो थ्रू कर लिया, सो ऑफ कोर्स दैट पर्सन इज डेफिनेटली गोइंग टू सी सक्सेस ऑल्सो। ओके, सो
ऑलवेज। और देखिए ये कोट्स ऐसे कोई हवा में नहीं बनाए जाते हैं, ये जिसने भी ये कोट्स कहा है दैट पर्सन हिमसेल्फ मस्ट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, एंड आई नो दैट मोस्ट ऑफ यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस थिंग, कि कभी कभी आपको लाइफ में होता है कि यू क्रेव फॉर समथिंग, यू बैडली क्रेव फॉर समथिंग, क्या ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, वो चीजें अगर आपको नहीं मिलती है ना तो इट इज फॉर समथिंग गुड, वो आपको उस टाइम नहीं रियलाइज होगा। वो डॉट जब आपको कुछ एक ऐसा फेज आपके लाइफ में आएगा व्हेन यू अटेन समथिंग, व्हेन यू अचीव समथिंग, देन यू विल कनेक्ट द डॉट्स, अच्छा वो नहीं हुआ तो दैट वाज गुड ओनली, कि हो सकता है यू माइट बी क्रेविंग फॉर समथिंग वेरी स्मॉल, और आपके साथ आगे जो फ्यूचर में होने वाला हो वो काफी कुछ अच्छा हो, ग्रैंड हो। सो दैट इज something that everyone has experienced. So these are not any imaginary things or something. These are practical things people have experienced. These all successful people have experienced this thing, and that is why they have given these things in forms of quote. So remember these things कि this too shall pass. जैसे आपका good phase नहीं रहता वैसे कोई भी bad phase नहीं रहेगा. So always remember this phase that this too shall pass. ये भी pass हो जाएगा. और अगर उस मोटिवेशन के साथ आप आगे बढ़ते हैं तो डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू एस्पायर फॉर। ओके, सो दिस वाज कोट, बहुत अच्छा कोट था। आई विल इट विल कीप यू मोटिवेटेड, कि आपको जब तक सक्सेस नहीं मिलेगा तो टिल दैट टाइम दिस कोट विल कीप यू मोटिवेटेड। सो प्लीज गाइस, दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब टू अवर वाईटी चैनल, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, एक बार फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक दिस सेशन एंड शेयर दिस सेशन गाइस। प्लीज, एक लाइक करने में इट हार्डली टेक्स अ माइक्रो सेकंड, सो प्लीज व्हेनेवर दोज हु आर वाचिंग द सेशन, कभी भी आप वॉच कर रहे हो तो प्लीज टेक योर एफर्ट कि एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए, शेयर दिस सेशन विद मैक्सिमम सो दैट अदर्स कैन आल्सो बी बेनिफिटेड। ओके, बिकॉज़ बहुत सारे लोग हैं जो फर्स्ट टाइम सेशन को देखते हैं जिनको पता ही नहीं होता, एंड दे सी कि मतलब उन्हें बहुत डिफरेंट चीजें दिखती हैं इस सेशन में बाकी एडिटोरियल के कंपैरिजन में। सो प्लीज टेक दिस एफर्ट एंड लेट अदर्स आल्सो जॉइन दिस एडिटोरियल सेशन। ओके, एंड दोस हु हैव नॉट डाउनलोडेड अवर Oliveboard ऐप, प्लीज डाउनलोड इट वंस। ये एवरी रिसेशन इज फॉलोड बाय इकोनॉमिक बुक, करेक्ट करेक्ट शुभम, शुभम हर जगह ये एप्लीकेबल है। रंजीत इज सेइंग मैम वीडियो इज नॉट क्लियर। रंजीत, आई कांट से व्हाई इट इज नॉट क्लियर बिकॉज़ आई हैव आस्क्ड टेक टीम आल्सो टू चेक इट, दे हैव कंफर्med me it is like best, it is at its best। गुड अभिषेक। सो प्लीज डाउनलोड द ऐप, जिनको Oliveboard ऐप डाउनलोड करना है आप देखेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, यू कैन क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यू कैन डाउनलोड द Oliveboard ऐप। बट एक बार सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा गाइस चैनल को। ओके, सो वी विल कम टू द ग्लिम्स ऑफ टुडेज सेशन। आज के सेशन में क्या क्या करने वाले हैं? सो रिविजन सेशन, फ्राइडे को हमने जो भी वो कैप्स देखे थे, इडियम्स एंड फ्रेजेस देखे थे, वी आर क्विकली गोइंग टू रिवाइज ऑल दीज थिंग्स। Then we have vocabs of today's session. As I told, today's session vocab is very important. मतलब इकोनॉमी से रिलेटेड हमने काफी आर्टिकल किए हैं, बट यहाँ पर फिर भी आपको कुछ नए नए वर्ड्स दिखेंगे। यू विल गेट सम फ्रेजेस, यू विल गेट सम टेक्निकल टर्म्स बेस्ड ऑन इकोनॉमी। सो ऑल दीज थिंग्स विल हेल्प यू, मतलब ये सारी चीजें आज के सेशन को बहुत स्पेशल बनाता है। सो वी हैव idioms एंड phrases also, ये भी है। जनरली हमें इकोनॉमी बेस्ड आर्टिकल में idioms एंड phrases नहीं मिलता, बट इन टुडेज सेशन वी हैव बोथ idioms एंड phrases एंड phrasal verbs, ये दोनों ही चीजें आपको आज के सेशन में मिलने वाले हैं। ओके, then complete analysis, needless to say, because as you know the article is itself very important because economy based है, अच्छी article है काफी। So complete analysis of today's article we are going to do। ग्रामर लर्निंग, अगेन इट इज गोइंग टू बी समथिंग डिफरेंट, हटके होने वाली है, कुछ अच्छी होने वाली है ग्रामर लर्निंग भी। टोन ऑब्जेक्टिव एंड होमवर्क, सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू टुडे। आई होप बाय दिस टाइम ईच एंड एवरीवन इज सेटल्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर रिवीजन सेशन, राइट? शैल वी स्टार्ट रिवीजन सेशन? फ्राइडे के वो कैप्स हैं, आई होप यू रिमेंबर दोज वर्ड्स, इसमें एक दो पहले के भी होंगे, लास्ट वीक के भी वो कैप्स हैं। एंड यस्टरडे आई शेयर्ड ऑल दोज पीडीएफ आल्सो, मंथली वो कैप पीडीएफ भी मैंने कल शाम तक, कल लेट नाइट आई शेयर्ड, सो प्लीज गो थ्रू दैट मंथली वो कैप पीडीएफ आल्सो। ओके, so I hope everyone is ready. Let's start revision session. Quickly match these words with their synonyms. Hurry up.
Quickly match these words, guys. Absolutely correct, Arju. Absolutely correct. Well done. Good. Madhu. 7, 1, 5, 4, 2, 6. Correct, Madhurima. Shubham, I guess A you have marked E, that is 3, I guess. Correct, Geeta. Correct, Shubham. Shubham, A वाला एक बार check कर लीजिए आप. Right. Correct. Very good, Dhirendra. Yes. Good. So erupt basically, as you know, this we discussed. ये Friday के vocab नहीं है, ये उसके पहले वाले session का है. Okay. Erupt basically we call to enter forcibly, enter violently. कि कहीं पर भी violently, forcibly enter कर जाना, so that is called erupt. Okay. So A is matched with third. It is a verb. It is a verb. Okay. Score underscore we saw so many times. Underscore basically we call to emphasize something. किसी भी चीज को emphasize करना, that is called underscore. So B is matched with 7. Okay. Resilient, you can say strong, sturdy, pliable. All these are the synonyms of the word resilient. Okay. So C will be matched with first. Stall is a verb. It is not that stall वो ठेला वाला stall नहीं है basically ये this stall basically we call to impede or obstruct something. Okay, it is a verb. It means impede, obstruct, hinder. That is called stall. Okay, so D will be matched with fifth, right? Synergy basically we call to combined preparation or action. कि combined preparation ये जो action होता है, so that is basically called synergy. So yes, E will be matched with fourth. Then we have the word mandate. So mandate you can say proclamation, decree, order, instruction, directive. So all these can be the synonyms of the word mandate. So ये सारे synonym हो सकते हैं. It is a noun and these all are also noun. So will be matched with 2. And envisage, as you know, envisage we call to anticipate, foresee. Okay. So predict, all these can be the synonyms of the word envisage. ये सारे के सारे envisage के synonym होते हैं. So G will be matched with 6. So this is the correct pairing. 3, 7, 1, 5, 4, 2, 6. Correct, Apur. That is the article today. So 3, 7, 1, 5, 4, 2, 6. Prognosis, you can say. Prognosis is a this. Yes, you can say prognosis. Speculate and all. So this was all about vocab of today's session. ये सारे आज के session के vocabs के लिए थे. Now let's see idioms and phrases. Quickly match these phrases, guys. ये सारे phrases को match करिए उनके meaning के साथ. This one is simple. I don't think there should be any confusion. Good, Apurv. Very good. Very good. Arju, please check your answer once. Fifth, you have written twice. You have mentioned twice. Correct. See, make a point basically it calls to take a particular care to do something. किसी भी चीज को करने के लिए जो extra effort हम लेते हैं, so that is called make a point. So make a point means to focus on something, to take a particular care to do something. That is called make a point. So A will be matched with fifth. Correct. Do away with means discard. Do away basically we call to discard something. So B we call to one. Nullify, you can say discard. So all these can be the synonym of do away with. So B will be matched with first. Correct. Cut down basically we call to reduce the size or quantity of something. D, C will be matched with third. Okay. Pick up basically we call to resume or improve. Pick up means फिर से कोई चीज start कर देना, restart, resume, improve. So all these can be the synonym of pick up. So D will be matched with fourth. And carve out basically we call to obtain, to create, you can say to obtain or create. So that is basically called carve out. Okay. So E will be matched with right. So 5, 1, 3, 4, 2. This is the correct pairing. Yes.
Everyone is correct. Absolutely correct. Yes. So this was all about revision session. ये सारे कल के revision session थे. Now let's start today's session. आज का session हम लोग start करेंगे. Okay. And please, as I always say, if you want to retain these vocabs, so please repeat each word after me. यहीं का यहीं याद हो जाएगा. अगर जितने बार मैं एक word बोलती हूँ, अगर उतने ही number of times आप भी repeat करेंगे, of course you will memorize these words. और अगर शाम को एक बार आपने रिवाइज कर लिया आज का ही आज का vocab, कल आपने रिवीजन कर लिया, तो आई कैन श्योर कि 70% चांसेस है कि यू विल रिटेन दीज वर्ड्स. आप ये सारे वर्ड्स याद रखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. So the first word of today's session is inevitable. We always say death is inevitable, right? ये quotation हमने सुना होगा, death is inevitable. What I think? Inevitable. Okay. So inevitable means that cannot be avoided. आप सबको पता है कि death को आप avoid नहीं कर सकते. कहते हैं ना मृत्यु टाली नहीं जा सकती. So you can't avoid death. So it is what? It is inevitable. Death is what? It is inevitable. Okay. So something that is certain basically means sure कि जो होके ही रहेगी. So that is called inevitable कि जिसको होना है वो होके ही रहेगी. You can't avoid this, you can't prevent that thing from happening. So that is called inevitable. It is an adjective. It is an adjective. Yes. Second word is persistently. Persistence word, you know, so many times we say patience, persistence, perseverance, all these words. So persistence basically we call to continuous, कि कोई चीज जो लगातार हो रही है. So persistently is an adverb. It means continuously. Persistent means what? Persistent. It is an adjective. It means continuous, लगातार. So persistently is an adverb that means continuously. That means continuously. Okay. Next word we have is bout. So bout is a noun basically. It is not about, it is only bout. So bout basically we call to a short period of intense activity. कि मतलब वो छोटा सा duration, वो छोटा सा time जहां पर कोई activity बहुत ज्यादा होती हो. So that is called bout. That is called bout. So this can also refer to duration of period. ये ड्यूरेशन या पीरियड को भी रेफर कर सकता है, बट बेसिकली इट इज अ पीरियड मार्क्ड विद इंक्रीज्ड एक्टिविटी, कि बहुत हलचल वाला जो पीरियड होता है. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड बाउट. उसे बाउट कहा जाता है. ओके. नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज थ्रस्ट. So thrust is used as a verb. Thrust, you know, force. That is basically called thrust. So basically, it is used here as a verb. ये as a verb use हुआ है. It means push suddenly and violently. किसी भी चीज को जो आप थोड़ा सा push कर रहे हैं, बहुत suddenly push कर रहे हैं, so that is called thrust. And all forms of thrust is same. There is no word called thrusted. जैसे हिट की, कट की, पुट की, इनकी सारी फॉर्म सेम होती है, V2 V3 फॉर्म. इन द सेम वे थ्रस्ट आल्सो हैज ऑल थ्री फॉर्म सेम. थ्रस्ट, थ्रस्ट, थ्रस्ट. ओके. सो रिमेंबर दीज फॉर्म्स ऑफ वर्ब आल्सो. यस. हाँ, सी दैट कैन बी अ डिफरेंट मीनिंग. That can be a different meaning. Okay. RV, I didn't get your this abort. Yes, continuously you can say. So what is the meaning of this word abort? Abort or avert you are saying? But I don't know. Do you mean to say avert? AVERT, avert. So next word we have is volatility. So volatile, you know. So volatility is basically a noun. So volatile, you know, changing. कोई चीज बहुत जो rapidly change होती है, तो that is called volatile. Okay. But volatility is noun. It means quality of changing rapidly. Thrust as a noun, it means force. As a noun, it means force. But as a verb, it means force something. It means push something. Okay. So that is a difference. Yes, bout is a word that is used in many games, but here bout means a short period of time. Okay. So avert means avoid. Inevitable means unavoidable. Avert is a verb. So volatility, basically quality of changing rapidly. That is called volatility. Okay. Next. डिप्रिशिएशन, ये आपने बहुत बार देखा होगा कि जब भी वैल्यू वगैरह की बात होती है, सो डिप्रिशिएशन बेसिकली वी कॉल टू डीवैल्यूएशन और चीपनिंग, कि किसी भी चीज की वैल्यू जो कम हो जाती है, सो डीवैल्यूएशन ऑफ समथिंग, चीपनिंग ऑफ समथिंग, दैट इज कॉल्ड डिप्रिशिएशन. अवर्ट कैन बी एंटोनिम, बट अवर्ट इज अ वर्ब. Okay, inevitable is an adjective. So you have to remember the difference in parts of speech also.
Sorry. Next, pertinently. Now, see, the word that we saw previously was that was persistent. Okay, that was persistently. But here it is pertinently. Don't get confused because दोनों ही बहुत close words हैं. Okay? Persistent and pertinent. These two are different words. And I guess I told this pertinent word a number of times. ये word मैंने बहुत बार आपको बताया. Pertinent basically we call to germane. Pertinent, germane, it means relevant. So it is an adjective, pertinent is an adjective, whereas pertinently is an adverb. So pertinently basically we call to relevantly, relating directly. So ये यही से बन चुका है. Don't get confused between persistent and pertinent. Okay? Persistent and pertinent, these are two different things. Yes. So pertinent we call to germane, relevant, कोई चीज उपयुक्त जो होती है, and persistent का मतलब जो लगातार हो रही है. तो pertinent का adverb आपका क्या हो जाएगा? Pertinently. Clear? Pertinent to, correct, Suresh. Okay. Next word we have is anchor. So anchor word is used as a verb here. Basically anchor आपको पता होगा कि that hook is called basically कि जहां पर हम ship वगैरह को attach करके रखते हैं shore से, harbor से, that is basically called anchor. Anchor जिसको हिंदी में I guess लंगर या कुछ ऐसे ही कहा जाता है. I have yes, it is called लंगर only शायद. So anchor here it is used as a verb. It means to secure firmly or fix something. कि किसी भी चीज को आप बहुत firmly secure करते हैं, fix करते हैं, that is called, yes, correct, Suresh, yes, that is anchor. So basically here it is used as verb that means to secure firmly or fix something, that is called anchor. Okay. Next we have the word anticipate. Anticipate we call to expect something, foresee something, predict something. Anticipate basically we call to expect, foresee, predict. अभी आपने देखा था एक word envisage. So envisage also can be the synonym here. ये सारे word अभी हमने उस दिन देखे थे envisage. So all these can be the synonym. Anticipate is a verb. Okay. Next word we have is upend. Upend basically we call to turn upside down. किसी भी चीज को ऊपर नीचे पूरा कर देना. So you can say chaotic situation जो होती है turning upside down, उथल पुथल कर देना, ऊपर नीचे कर देना. So that is basically we call to end. Okay. So is also a verb turn upside down. That is called upend. Okay. Next word we have is surfeit. Surfeit basically we call to excess surplus of something. Okay, superfluous, surfeit, excess, surplus, all these are synonyms. So surfeit is what? It is basically a noun. Okay, excess of something, surplus of something, that is basically called surfeit. Next word we have is buoyed. See, buoyed. Buoyed basically we call to cheerful and confident. इसकी literal meaning देखेंगे. So I was buoyed by something. Basically we use this phrase buoyed. Buoyed up we basically use. So this we basically use generally अगर आप देखेंगे तो this we use in terms of being cheerful, in terms of being confident. Okay, but buoyed basically it also means अगर आप economic terms में देखेंगे so it means cause a price to remain at a high level. Yes, it basically refers to keeping price at high level की कोई किसी की चीज की वजह से किसी इफेक्ट की वजह से आपकी चीजों का जो रेट बढ़ जाता प्राइस बढ़ जाती है so that is basically we call to buoyed. मतलब increase in price on a high level. Correct. That is called buoyed. The next word we have is spell. Spell basically we call to देखिए spell word की बहुत सारी मीनिंग होती है. Spell a word, pronounce a word. Okay, spelling. Spell basically here it is used as charm or attraction of something. किसी भी चीज का charm, attraction, magic, all these can be the synonym of the word spell. ये सारे के सारे spell हो सकते हैं. Okay. Next word we have is stance. It is also a noun here. Spell is also a noun. Stance is also a noun here. Stance basically we call to viewpoint or opinion. Okay. आपका किसी भी चीज में जो you can say attitude also. Your attitude towards something, your viewpoint, your opinion. So all these words mean what? It is a stance. Okay? Spell can call, magic also. All these things can be the synonym. These are the spell at all. Yes. Next word is calibrated. Calibrated basically we call to something that is carefully assessed. Assessed basically means evaluated. कोई चीज बहुत ही जो carefully evaluate की गई हो या adjust की गई हो, so that is basically called calibrated. Okay, so
carefully evaluated or adjusted, that is called calibrated. Okay. Next word we have is trail. Trail basically we call to series or chain of something. Trail basically we call to path also. Trail we also use for series or chain. Okay. Calibrated can be an adjective also. It can be a verb also. Trail is basically a noun. Okay. So series or chain of something, that is called trail. And then last word is your spillover. Now, spillover is a term of economy. Spillover, देखिए spill का मतलब ही होता है कोई चीज जो बाहर आ जाए. Okay. Spill over in economy, it means the effect on the economy of a country from unrelated events happening in another country. Best example is Ukraine. कि यूक्रेन और रशिया का जो वॉर था, उसका जो इफेक्ट था वो किस पे, उसके इकोनॉमी का जो इफेक्ट था वो वहां पर जो भी चीजें हुई, सो दैट अफेक्टेड द इकोनॉमी ऑफ एवरी नेशन, वो हर नेशन की इकोनॉमी को अफेक्ट किया था. सो दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्पिल ओवर, दैट द इफेक्ट ऑन द इकोनॉमी ऑफ अ वन कंट्री फ्रॉम रिलेटेड इवेंट्स हैपनिंग इन अनदर कंट्री, कि दूसरे देश में क्या हो रहा है उसकी वजह से आपके देश की इकोनॉमी पे जो इफेक्ट हो रहा है, so that is basically called spillover. So this is also a term, it is a noun. So I hope all these words are clear to you. काफी सारे words आज हमने आज के सेशन में देखा है. So are these words clear to everyone? Any confusion, any doubt? So this is just a term you will have to remember कि इसका particular effect usage आपका ये हो जाएगा. Ripple effect, yes you can say, basically on economy. Okay. So all these words are clear. Let's see idioms and phrases. So the first idiom of today's session is eye of a new storm. So storm, you know, basically we call to difficulty. Storm in generally we relate storm with a difficulty. So eye of a new storm means deeply involved in a difficult or complex situation. When you get into some difficulties, when you get into some complex situation, complexities, so that is basically referred as eye of a new storm. Next word we have is at pains. So at pains is also a good idiom. It means try hard to do something. To try hard to do something, that is called at pains. Okay. Next we have is pass through. So pass through, say it is not an idiom. Again, it is a term. ये भी एक economy का term ही है pass through. So pass through means the process of offsetting increased cost by raising prices. Offsetting basically you can say balancing. मतलब कि एक जो मतलब जो कॉस्ट बढ़ी हुई है उनको आप बैलेंस कर रहे हैं प्राइसेस को रेस करके. मतलब ऑलरेडी कॉस्ट्स आर इंक्रीज्ड, ऑलरेडी ये बढ़ी हुई हैं, बट यू आर ट्राइंग टू बैलेंस दीज इंक्रीज्ड कॉस्ट बाय रेजिंग प्राइसेस. रेजिंग मींस इंक्रीजिंग प्राइसेस, कि आप दाम बढ़ा करके ही इसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो दिस बेसिकली पास थ्रू, इट इज व्हाट, इट इज अ टर्म. Instance, you can say a moment. Instance, you can say example. For instance means for example, moment. But stance is different thing. Stance, you can say viewpoint, attitude, all these things. Okay, Ranjit? So there is a difference in stance and instance. So these are the idioms of today's session. Basically, ये दो idiom है. This pass through is not an idiom. It is just a term. जैसे spill over economy का एक term है. In the same way, pass through is also a term of economy. Okay. And at pains means to try hard to do something. Eye of a new storm means deeply involved in a difficult or complex situation. Now, next we have to see phrasal verbs. So the first phrasal verb is box in. Box in basically it is the title only. The title में ही आपको ये word मिलेगा box in. So box in basically we call to prevent someone or something from moving freely. किसी भी पर्सन को, किसी भी चीज को आप फ्रीली मूव करने से प्रिवेंट करते, इट मींस यू आर ट्राइंग टू कन्फाइन दैट पर्सन, यू आर ट्राइंग टू इम्प्रिजन समथिंग. मतलब किसी चीज को कंट्रोल में रखना. यू आर नॉट लेटिंग दैट थिंग फ्री रोम और मूव फ्रीली. आप उसको फ्रीली मूव करने नहीं देना चाहते हैं. So that is basically called box in. Prevent someone or something from moving freely. That is called confine something, imprison something. These all are the synonyms of box in. Correct, Neeraj. It is related to regarding repo rate hike. Yes. Push push up हमने पहले भी किया था. Push up we call to increase something, to lift up something. But here it is basically used in terms of increasing something. So push up we call to lift up, increase. All these are the synonyms of push up. Okay, ये सारे के सारे synonyms हैं. Next word we have is confront with, confronted with, confront with. So confront with basically we call to tackle, bring face to face, tackle, challenge. All these can be the synonyms. Okay.
So challenge, tackle, cause to meet, bring face to face. So all these are the synonyms of confront with. Okay. So these are the phrases, vocabs, idioms of today's session. ये सारे के सारे हैं. So now you have to see the usage of each and every word in the article. Okay. I hope you will try to remember, try to recall these words when you will see these words in the article. So as you guys know, we have started SBIPO batch, okay, from 29th of September. Still admissions are open. So those who are interested in joining this batch, because it is going to be pre plus May's batch. So those who are interested can definitely join this batch using my code SAVA. So this is the code you can use anywhere. Okay? So, but as I always suggest, if you want to attend multiple courses, especially for beginners, so those who are looking for preparation next year, कि जो next year के लिए fully prepared होना चाहते हैं, so for them, Banking Super Elite is the best buy plan, because in Banking Super Elite you will get all the live classes, live practice sessions, okay, and all the mock tests. LPS is also very important feature of Oliveboard. So LPS, live classes, live doubt clearing sessions, everything is included in योर बैंकिंग सुपर एलीट आपको सारे के सारे फीचर्स मिलेंगे सो दिस इज द बेस्ट बाय प्लान ऑन हॉलीवुड प्लेटफॉर्म बट स्टिल इफ देयर इज एनीवन who wants to join only for mock test so they can definitely take the subscription of banking elite so banking elite is only for mock test super elite for is for everything mock test as well as classes okay? So this is the code. This code can be applied anywhere for additional discount. जो भी existing discount है आप उसके ऊपर extra 5% के लिए you can use my code SABA. Okay, and even if you want to purchase SSC mock test guys, because अब आपको SSC के भी प्रिपरेशन में लग जाना है कि वीक में एक या दो मॉक टेस्ट आपको डेफिनेटली SSC का लेना ही लेना होगा. So for purchasing anything on Oliveboard platform, you can use my code SABA for additional discount. And this is my Telegram channel, Learn English with Saba. Those who have not joined my Telegram channel, please join this Telegram channel for updates on every session and for PDF. हर session के update के लिए, PDF के लिए, please do remember to join this Telegram channel. One more thing, yesterday I shared monthly vocab PDF. ये September month की भी PDF मैंने share कर दी है. So please go through that. Okay, एक बार उसको आप जरूर देख लीजिएगा. Right? Let's start the article. Let me hide myself. By that time, you can go through this article quickly. एक बार आप पढ़ लेंगे तो it will be easy for you to understand. Quickly read this, guys. Let me know once you all have read. Very quick reading only, just to increase your reading speed, improve your reading speed and other things. Just go through this very quickly. Good, Dhiren. Chale, let's see. Boxed in. So boxed in, basically here we are talking about preventing confining inflation. ये बेसिकली इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए या इन्फ्लेशन के लिए, बिकॉज यहाँ पर ये फ्रेज क्यों यूज किया गया है, व्हाट आर वी ट्राइंग टू कन्फाइन हियर, क्या कन्फाइन करने की बातें हो रही है. सो दिस इज बेसिकली ऑन नीड फॉर इन्फ्लेशन कंट्रोल एज टॉप पॉलिसी प्रायोरिटी. ये हमारी सबसे बड़ी पॉलिसी प्रायोरिटी जो अभी होनी चाहिए, दैट शुड बी टू कंट्रोल इन्फ्लेशन. ओके, so this is basically used for controlling inflation only, right? So as high prices restrain consumption, restrain means what, limit consumption. कि ये जो चीजों के दाम बढ़ रहे हैं वो हमारे कंजम्पशन को क्या कर रहा है, वो लिमिट कर रहा है. इन्फ्लेशन कंट्रोल मस्ट बी द टॉप पॉलिसी प्रायोरिटी. तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना ये सबसे बड़ी पॉलिसी होनी चाहिए हमारी. ओके, सबसे प्रायोरिटी, दिस शुड बी अवर प्रायोरिटी, यू कैन से. The Reserve Bank of India's rate decision on Friday was ultimately inevitable. Okay, this was something that they decided to increase the interest rate by 50 basis, or repo rate they tried to increase by 50 basis point. So that was something inevitable कि जिसे आप avoid नहीं किया जा सकता था. That was very much required also. This couldn't be avoided.
monetary policy makers were left with little choice but to raise interest by 50 basis points. कि those who are making policies, okay, policy makers, monetary policy makers, they had no other choice but to increase the rate interest by 50 basis points. कि इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं. As a bout of extreme volatility in international financial market combines with persistently high domestic retail inflation to threaten economic stability globally and in India. Now, why were they compelled to increase interest rates? ऐसा क्यों उनको मजबूर हो गए वो इंटरेस्ट रेट को मतलब इंक्रीज करने के लिए? They didn't have any other option. So as about, because this period, bout here basically is referring to period or duration. So period of extreme volatility, ये जो international market में जो volatility period है, ये जो changes वाले period है, combines with persistently, it combines with continuously high domestic retail inflation. Persistently means continuously, okay? So all these things when combined, they started threatening macroeconomic stability globally and in India. So all these things started threatening macroeconomic stability. So RBI has no other decision, monetary policy makers, they had no other choice but to increase the interest rate by 50 basis points. इसके अलावा उनके पास कोई और चॉइस नहीं था. RBI Governor Shaktikanta Das cited basically means quoted. Okay. Quoted the aggressive monetary policy actions and even more aggressive communication from advanced economy central banks as a third shock following the pandemic and Russia's invasion of Ukraine, which he said had thrust the global economy into the eyes of new storm. Okay. Now he gave the reason कि why they had to increase this, कि उन्हें interest rate या repo rate क्यों बढ़ाना पड़ा. So they gave the reason that कि aggressive monetary policy actions and even more aggressive communication, कि ये जो भी communication वगैरह आ रहे थे from advanced economy, that they were also taking strong aggressive monetary policy actions as a third shock. देखिए ऑलरेडी हमारे पास दो शॉक थे, पैंडेमिक के और दूसरा रसियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन. सो ये दो चीजों की वजह से की इकोनॉमी में ये जो भी इन्फ्लेशन वगैरह चल रहा है, दीज आर बेसिकली बिकॉज ऑफ these two strong reasons. Okay, but the third shock is what? The shock they were getting from the aggressive communication from the advanced economy central bank, कि वहां से जो इनके पास communication वगैरह आ रहा था, so that was a third shock for them. Okay, emerging market economies, acha, and this communication and these all things, they had pushed द ग्लोबल इकोनॉमी की, ये सारी चीजों ने ग्लोबल इकोनॉमी को एक नई डिफिकल्टी में डाल दिया है. दे हैव पुश्ड द ग्लोबल इकोनॉमी इनटू द आई ऑफ अ न्यू स्टॉर्म, कि एक नई डिफिकल्टी में इन्होंने डाल दिया है इकोनॉमी को. emerging market, emerging basically we call to developing market here, कि जो भी developing markets हैं, market economies in particular are confronted with challenges of slowing global growth. So now they are facing the challenges of slowing global growth, elevated food and energy prices. कि food की, energy की, इन सारे के prices आपकी क्या हो गई हैं? बढ़ गई हैं. Okay. Overs from advanced economy policy normalization. Now what we are facing कि जो policy normalization जो advanced economy अपने अपने country अपने nations में ले रही हैं, so that spill over, that effect we have to see in our nations, कि वो emerging nations को भी उनके effect देखने पड़ रहे हैं. Okay. एंड शार्प करेंसी डिप्रिसिएशन की, दैट डीवैल्यूइंग ऑफ द करेंसी. इंडिया भी आपने देखा होगा, कितने सारे आर्टिकल हमने किए थे कि इंडिया की भी वैल्यू आपकी क्या हो रही है? कम हो रही है. सो devaluation of the currency. So all these things are the reason. Mr. Das explained, elaborating on the external challenges confronting emerging economies, including India. So all these are the reasons he gave, that what are the challenges that all emerging economies, including India, are facing, that all the developing nations are facing. Okay. The rupee too has been under pressure. It is not that only other currencies are devaluing. Rupees भी आपका pressure में है, weakening by more than 7% against the dollar since the start of current fiscal year in April. कि अप्रैल से लेकर के अभी तक रुपीस जो है 7% वो डॉलर के अगेंस्ट में वीकन हो चुका है. So this is also something very important. Yes.
So, and this has added upward pressure to price stability by way of imported inflation. कि मतलब इन सारी चीजों से कि रुपी की वैल्यू डिवैल्यूएट हो रही है, ऑलरेडी वी आर सीइंग प्राइस हाइक एंड ऑल दीज थिंग्स. So all these things have added upward pressure to price stability by way of imported inflation. The RBI September issue of the monetary policy report, in fact, pertinently means uh, related, you can say. Pertinent means relevant. So you can say accurately observes the second round effects of low growth and high inflation globally could keep domestic inflation at elevated levels and even beyond 8 quarters. कि ये जो इनका सितंबर आरबीआई का सितंबर इशू था मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट का, so this report has observed, it has clearly observed that कि सेकेंड राउंड ऑफ इफेक्ट्स ऑफ लो ग्रोथ एंड हाई इन्फ्लेशन, कि ये जो सेकेंड राउंड है कि सेकेंड क्वार्टर में भी ये जो सितंबर के बाद वाला जो फेज है इसमें भी जो हमें लो ग्रोथ और हाई इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, इट कैन कीप डोमेस्टिक इन्फ्लेशन एट एलिवेटेड लेवल्स, कि ये अभी भी डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को इंक्रीज लेवल पे रख सकती है इवन बियॉन्ड 8 क्वार्टर्स के. 8 क्वार्टर्स के बाद भी हमारा इन्फ्लेशन ये कंटिन्यू हो सकता है. Necessitating appropriate monetary actions to anchor inflation expectations. कि now we will have to take appropriate monetary actions to fix these inflation expectation. कि इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ ना कुछ necessary steps देखना पड़ेगा. Yes, pertinent, you can say relevant, accurate, okay, appropriate, correct. The central bank's own projections, in fact, do not anticipate a slowing in India's retail inflation before its upper tolerance threshold of 6% till January-March quarter. कि इनके जो खुद के प्रोजेक्शन है, they also do not foresee, कि मतलब ये ऐसा कोई foresee, मतलब इनके भी कोई चांसेस नहीं है that even till January-March quarter की रिटेल इन्फ्लेशन कुछ भी कम होगा, वो अपने अपर टॉलरेंस से जो थ्रेशोल्ड है उससे कुछ कम आएगा. इवन दे आर ऑल्सो नॉट प्रोजेक्टिंग दिस, कि सेंट्रल बैंक अपना खुद का प्रोजेक्शन इन सारी चीजों को प्रोजेक्ट नहीं कर रहा. दे आर नॉट सीइंग एनी सच सिनेरियो. इट मींस इन्फ्लेशन विल बी हाई ओनली. And Mr. Das was right to point out the multiple factors that could end RBI's inflation outlook. And even he has said that कि जो RBI का outlook है, जो उन्होंने अपना perspective दिया है, so there can be multiple factors के जो इस outlook को भी append कर सकते हैं. Append means उथल पुथल ऊपर नीचे कर सकते हैं. They can turn it upside down. Okay. These include the likelihood of higher pass-through of input costs by service providers on increased demand, as well as upside risk to food prices from both the lower kharif output of rice and pulses and the unseasonably excess spells of rainfall in some regions that have pushed up the prices of vegetables. Now, all these things he has given the reason. Okay. There can be many things that can even turn upside down RBI's forecast, कि वो RBI's forecast को भी upside down कर सकता है. Now what are these? कि these include the likelihood of higher pass through of input cost. So pass through basically, as I told, कि process of balancing increased cost by raising prices, कि किसी भी increased cost को आप जो है price raise करके जो balance कर रहे हैं. So all these can be the reasons behind that. Okay. By service providers on increased demand, as well as upside risk to food prices from both the lower kharif output of rice, कि मतलब जो राइस की प्रोडक्शन है वो कम हुई है. ओके. दालों की प्रोडक्शन कम हुई है. ये जो रेनी सीजन था, आपका मॉनसून था, वो कभी कभी किस किस रीजन में बहुत ज्यादा था, मतलब दैट वाज नॉट यूनिफॉर्म, यू कैन से मॉनसून वाज नॉट यूनिफॉर्म. सो ऑल दीज थिंग्स कैन एग्रावेट आवर सिचुएशन, की ये सारी चीजें हमारी सिचुएशन को एग्रावेट कर सकती हैं, and they can turn the outlook of RBI also, मतलब उसको चेंज कर सकती हैं. they can. The surfeit of liquidity or cash in the banking system, which is expected to be buoyed by the enhanced government spending in the coming months, could also threaten price stability, and RBI governor was at pains to note that policy stance of a calibrated withdrawal of accommodation had become an imperative. Now all these things की मतलब ये सारे के सारे reason दिए जा रहे हैं कि what all can are the challenging situations before monetary policy makers. So the surfeit, you know, excess. So the excess of liquidity or cash in the banking system, कि banking system में liquidity या cash बढ़ जाएगा, which is expected to be buoyed by enhanced government spending in the coming months.
ओके, तो ये जो है इट कैन रिमेन एट अ हाई लेवल बाय enhanced government spending in the coming months. Could also threaten price stability and ये भी आपके price stability को क्या कर सकता है, threaten कर सकता है. And RBI governor was at pains to note that the policy stance of a calibrated withdrawal. Calibrated means carefully assessed, मतलब जो चीजें बहुत अच्छे से assess की गई हों. ओके, विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन हैड बिकम एन इम्परेटिव, कि ये चीजें क्या हो गई हैं, बहुत ज्यादा इम्परेटिव हो गई. इम्परेटिव बेसिकली यू कैन से नेसेसरी, ऑब्लिगेटरी. ओके, so all these things have become imperative necessary. Specifically, he pointed out that even as nominal policy repo rate had been raised by 190 basis points since May, कि ये जो nominal policy repo rate है वो 190 basis point तक बढ़ गई है since May, the rate adjusted for inflation still trailed the 2019 levels. मतलब कि जो 2019 का जो लेवल था उसको भी ये पास कर गई हैं. ओके, इट इज बेसिकली ऑन दैट, ट्रेल इज यूज्ड एज अ वर्ब हियर. ओके, ऑन द सेम path you can say. With the RBI's latest surveys of households inflation expectation and consumer confidence too signaling that price pressures will continue to restrain consumption, inflation control will have to remain the top policy priority. मतलब जो आरबीआई का लेटेस्ट सर्वे था हाउस होल्ड इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन पे, so all these things are indicating, signaling basically means these all things are indicating that price pressure, कि ये जो increase in price है, it will continue to restrain consumption, कि ये कहीं ना कहीं consumption को control करेगा. So it will continue, अभी आगे भी ये continue रहेगा. But inflation control should be top policy priority, कि inflation control जो होना चाहिए वो basically हमारा top policy priority होना चाहिए. So this is the exact meaning. Okay. Withdrawal of accommodation, I guess it is some their term. Can't explain you very clearly. Even I have not that exact idea. Okay, what they are referring to withdrawal of accommodation. So basically, those who are from this economy background, they can only refer to this. What is this particular phrase? So it might be there some particular thing जिसको वो refer कर रहे होंगे. Okay. It's step that they take to improve the economy or to control inflation. So basically, they can be referring to all those things. Okay. So this was entire article. You got to know so many verbs. Now tell me what is incorrect here, guys. Buoyant word has so many meanings, Abhishek. What is wrong here? Prone we will come later. Withdrawing accommodative stance of RBI. So that is basically they take to control inflation, na? Combined with, no, 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 no. Combines with is correct here. Of B. Where you are saying of, no. Correct, Neeraj. सी अभी हमने इसको देखा भी था. इट मीन्स यू पीपल डोंट सी द सेंटेंस. ये फर्स्ट पैसेज से ही है जिसको मैंने आपको पढ़ने के लिए टाइम भी दिया था कि पॉलिसी मेकर्स वर लेफ्ट विथ अ लिटिल चॉइस. अ लिटिल यू नो इट कैरीज पॉजिटिव सेंस, कैरीज पॉजिटिव सेंस, एंड लिटिल यू नो नेगेटिव सेंस. उनके पास क्या सेंस हमें आ रहा था, उनके पास चॉइस था या नहीं था तब वो जाकर के रेपो रेट बढ़ाए थे. सो और देखिए बट जो होता है ना, बट की पेयरिंग नो बट की साथ होती है, नॉट बट. बट के पेयरिंग बेसिकली नॉट बट की पेयरिंग होती है. दे हैड नो चॉइस बट टू रेस. ओके, कि उनके पास इसके सिवा कोई और चॉइस नहीं था. वी आर गेटिंग द सेंस ऑफ नेगेटिव. यस, only little indicates negative. Sorry. So they had little choice, not a little choice. They had little choice. मतलब इसका सेंस आ रहा है कि they had no choice but to raise interest rate by 50 basis points. कि 50 basis points interest rate बढ़ाने के अलावा उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था. So this is the sense here. Right, everyone? Clear? तो देखिए बाकी जो आप बातें कर रहे हैं ना, as a bout of extreme volatility in international market combines with. So about is singular here. It is a period that is referring to period. So singular here. So combines with is absolutely correct because we are using it in present tense. Okay. Combines with persistently high domestic retail inflation
to threaten macroeconomic stability globally and in India. So this is something that is even happening now. So this is absolutely correct. The error only lies in A part. So little a little का अगर कभी आपको क्वेश्चन मिलता है तो you will get in this form only. And remember, no but की पेयरिंग चलती है, जैसे not only but also की पेयरिंग चलती है, in the same way no और but की भी पेयरिंग चलती है जब आप ये कहेंगे कि they had no other choice but to this. Okay, तो इसके अलावा but here means except, but here is carrying the sense of except. इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा चॉइस नहीं था. Choice is countable, it can be choices. Choice is countable now, it can be choices. But here we are referring to one choice, okay? So here we are talking about one only, so that is why we are taking it uncountable. Okay, Arju? Now, what is the tone of today's article? See, choices we have word. When we talk about choices of different thing, अगर आप अलग-अलग field के choices की बात करेंगे ना, when you refer to choices of different thing, then we have choices word. No, 4 p.m. class we don't have today, Apur. But here choice means they are referring to only this one particular field. So that is why they have taken it as uncountable. Critical you can't say, not critical. Yes, analytical and concern. Analytical, you can say, informative, you say. See, there is nothing that the author is criticizing. There is nothing that the author is criticizing. It is basically the tone is analytical, you can say, and you can say it is concerned. Basically, it is a tone of concern, worry. Okay. So, analytical, informative also you can say. So, analytical, concern, all these things can be there. Okay. So, it is not critical. Yes. So, this is the tone. So this is your homework. Only 4 phrases I have given you. So please try to use these phrases in a sentence of your own. कि इन सबको अपने sentence में use करिएगा. Okay. Please, before leaving the session, those who have not hit the like button, please like this session, subscribe to our YT channel and share this session, guys. Okay. कि session को एक बार share भी कर दीजिएगा. And now today from 9 a.m. we will start IBPS PO Pre. देखिए IBPS क्लर्क का रिजल्ट इंग्लिश बहुत सिंपल आया था, तो जनरली लोगों का टारगेट था 30 आउट ऑफ 30, बट कट ऑफ आपको पता है कि बहुत हाई गया IBPS क्लर्क का. IBPS क्लर्क का जो कट ऑफ बहुत हाई था, तो इन द सेम वे पीओ में भी आपको वो चीजें मेंटेन करनी होंगी कि अगर आपका पेपर इजी आता है, ड्यूएबल आता है, तो यू हैव टू मेंटेन योर स्पीड as well as accuracy attempt also. Everything you will have to balance. So from today we are going to start basically IBPS PO Pre. The target will be 30 out of 30 to score 30 out of 30. Okay. So please join this 9 a.m. session from today onwards. Because 3 दिन के बाद होने वाला है, तो please do. Yes, super gaming. I'm married. Yes, PO English will be good one. So we will basically do this session keeping in mind that PO level. Okay, PO का level रख के ही mind में करेंगे. Of course. Yes, I am. So now I'm ending the session. So please, guys, we'll meet at 9 a.m. Okay, thank you.